Welcome, students. This is our online class in physics. Now, today's topic is force and law of motion. Force. What is force? Force is an action of one body on the another body. A force may be defined as an action which changes or tends to change the state of rest of uniform motion of body, या हिंदी में इसको हम बल कहते हैं. बल क्या है? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विरामावस्था अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है. Introduction. A force is a push or pull, an agent that can affect the state of motion of an object. Force is a vector. Its unit is Newton or kilogram meter per second square. Force can be created from direct contact or be remote. There are also special forces that occur within atoms. Types of forces. There are two types of forces. First one is balanced forces and second one is unbalanced forces. Balanced forces are संतुलित बल, forces that cancel each other out. Therefore, the net force is zero and there are no changes in the motion. या हिंदी में कह सकते हैं, जब वस्तु पर कार्य करने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य हो, अर्थात वस्तु की स्थिति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो. That type of forces are called balanced forces और संतुलित बल. Now, unbalanced force और असंतुलित बल. Unbalanced forces occurs when one force is greater than its opposite force. या हिंदी में जब वस्तु पर कार्य करने वाले अनेक बलों का परिणामी बल शून्य न हो. Unbalanced forces can cause object to speed up, slow down, stop or change direction. अनबैलेंस या असंतुलित बल की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, स्पीड दे सकते हैं, कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं या दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं. नाउ द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. भौतिकी में न्यूटन ने अपने 3 नियम दिए हैं. तीनों नियम इस प्रकार हैं. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. A body at rest will remain at rest and a body in motion will remain in motion unless it is acted upon by an external forces. Second one is the force acting on an object is equal to the mass of that object times its acceleration. F is equals to ma. And the third one is for every action there is an equal and opposite reaction. Now explanation of first law of motion. Newton's first law of motion are also called law of inertia. An object will not change its motion unless acted on by an unbalanced force. जब तक किसी असंतुलित बल द्वारा
किसी वस्तु पर बल न लगाया जाए वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। व्हाट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल स्टे एट रेस्ट। कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी। एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल स्टे इन मोशन। यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी। An object will remain at rest or linear motion unless acted by a force। जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाहरी असंतुलित बल न लगाया जाए। This is the Newton's first law of motion or law of inertia। inertia mass और inertia mass is the amount of matter in an object। the more mass and has object। किसी वस्तु पर अधिक मास लग रहा है the more inertia of object has। वह वस्तु अधिक इनर्शिया रखती है। लेस मास इज इक्वल्स टू लेस इनर्शिया, मोर मास इज इक्वल्स टू मोर इनर्शिया। अर्थात किसी वस्तु के जड़त्व की माप वस्तु के द्रव्यमान अर्थात वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा से की जाती है। Newton's second law of motion। The acceleration or change in velocity। Change in velocity is an acceleration। No, the acceleration of an object depends on the mass of the object and the amount of the force applied। The acceleration of an object is proportional to the resultant force। acting on the object and inversely proportional to the mass of the object। as an equation F is equals to ma, where F is force, m is mass and a is acceleration। and the units are force, unit of force is Newton, mass is kilogram, acceleration is meter per second। The differential form of Newton's second law is force is equals to change of momentum with change of time। Now the third one, Newton's third law of motion। For every action there is an equal and opposite reaction। For example, rocket engine thrust, exhaust flow pushed backward, the result is engine pushed forward। This is the third law of motion। हिंदी में इसको क्रिया प्रतिक्रिया का भी नियम भी कहते हैं। Momentum is defined as inertia of motion, meaning how much inertia something has when it is in motion। and the equation of momentum is P is equals to mv, where P is momentum and the unit is kilogram into meter per second। हिंदी में इसे हम संवेग कहते हैं। किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के बराबर होता है। संवेग या मोमेंटम
is the vector velocity. Or in another word, a quantity expressing the motion of a body or system equal to the product of the mass of a body and its velocity. And for a system equal to the vector sum of the products of mass and velocity of each particle in the system. Our momentum is equals to mass into velocity. Now the conservation of momentum, or law of conservation of momentum. The law of conservation of momentum states when a system of interacting objects is not influenced by outsider forces like friction, the total momentum of system cannot change. The total momentum of all objects interacting with one another remains constant regardless of the nature of the forces between the objects. Therefore, initial momentum is equals to final momentum, या हिंदी में हम इसे कह सकते हैं किसी विलग निकाय में कुल संवेग संरक्षित रहता है. This is the chapter force and law of motion. Thank you.